ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ का पूर्वार्ध 61वां अध्याय हम देख रहे हैं। तो भगवान वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं, जो जैसे मनोरथ करता है उसको ऐसे ही दुनिया दिखाई देता है, और जिसका कोई मनोरथ है ही नहीं, मतलब कोई भावना ही नहीं है, उसको दुनिया दिखेगा क्या। हे श्री रामचंद्र जी, अचेतन भी कर्म करता है तो क्या कहें चेतन को। और दुनिया में है अगर सच्ची बोलेंगे तो दुनिया सब अचेतन का ही तो रूप है। हम जो कहते हैं लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, ऑल दीज आर बोगस नॉनसेंस। नथिंग इज लिविंग हियर। The eternal life is real life, and interrupted lives are not lives। ऐसा तो कुछ भी हो सकता है। हे श्री राम जी, इत्यादि पूर्व में उक्त और दूसरे भी असंभावित विचित्र कार्यों के विभ्रम, जैसे दैत्यों का माया और गंधर्वों की माया के विलासों से देखे गए हैं। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। गंधर्व और हमारा देवताओं का और दैत्यों का तो बहुत दूर की बात, लेकिन जो मैजिक में हम देखते हैं क्या है वो, वैसे ही ये सारा दुनिया मैजिक शो है। और हम वो माया का भी एक दूसरा नाम है जादूगरनी। जादूगरनी माया का नाम है जादू दिखाने वाली, जो देश और काल में
मंत्र प्रयोग आदि क्रियाओं से और औषधादि द्रव्यों से, मणियों से तथा पिशाच आदि के संचारों से उत्पन्न है। वे विचित्र कार्यों के विभ्रम भी, जो कि सत्य पदार्थों की तरह अर्थक्रियाकारी अनंत एवं गंधर्व नगर के सदृश जनित है, देखे गए हैं। बहुत कुछ देखा गया है। क्या वो सब सच है? अगर हम मैजिक को सच मान लेते हैं, मैजिक में विश्वास करते हैं, तो लोहार और सोनार क्या कम मैजिशियन है? एक लोहा का टुकड़ा को तलवार बना देते हैं, बताओ। और सोनार को देखो, वो अगर सोना के टुकड़ा को इतना सुंदर हार बना देते हैं, तो फिर क्यों नहीं उसको मैजिक मानेंगे? जो था वो नहीं रहा और कुछ बन गया। एक बार क्या हुआ, सत्य साई बाबा, यू नो, great Mahatma, he used to bring anything and everything from sky and give you as a presentation. तो वो आए थे हमारे गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। मैं था उस समय, आश्रम में था। तो वो आए और गुरुदेव के कुटीर में गए, और दो चार वही जो गुरुदेव का इनर सर्कल, जो सेवाकारी लोग वही थे सो। तो गुरुदेव आसन दिए, बड़ा प्यार से उनका स्वागत किए, और वो जैसे बैठे तो गुरुदेव को एक भेंट दिए। भेंट क्या, आसमान से ऐसा किए, 10,000 का एक गट्ठी नोट का गुरुदेव को भेंट दिए। तो गुरुदेव उनको देख करके थोड़ा मुस्कराए और वो समझ गए, तो वो भी मुस्कराए। सिर्फ मुस्कराहट से समझ हो गया दोनों को। देना लेना सब हो गया। तो वो चले गए बाद में। तो हमारे गुरु भाई लोग बोले गुरुदेव से, गुरुदेव आप भी तो दिखा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं दिखाए कुछ? वो जब आसमान से निकाल के दे दिए 10,000 का नोट, तो फिर आप भी कुछ करना था ना ऐसा। तो गुरुदेव का कितना सुंदर जवाब था। He gave a 10,000 rupees note bundle. So Gurudev smiled at him, and he also smiled back. Both understood. That was enough. When he went back, our Guru Bhai, they requested Guruji, Gurudev, why did you not show something? Gurudev answers, अरे जो इसको देखना है वो सारा देख सकता है, जिसका आंख नहीं वो क्या देखेगा? यहाँ जहाँ कुछ नहीं था, इधर एक आश्रम बन गया, ये सब कुछ हो गया। ये क्या चमत्कार नहीं है? ये पेड़ लता, ये चमत्कार नहीं है? जहाँ मिट्टी था उधर पेड़ देखो इतना बड़ा आज खड़ा है, ये चमत्कार नहीं है? Everything is wonder. In the empty ground comes up such a big tree. Is it not a wonder? Is it not a magic? What else you want to see? If you have eyes, you can see everywhere. The whole world is a wonder. आसमान में तो है ये।
अरे आसमान से ला करके क्या कर दिखाना है, ये सब आसमान से आ रखा है। One who understands it, what more he wants to show or see? Everything is from sky only. उसको आंख चाहिए देखने के लिए। तुम्हारा आंख क्या देखता है? जब तुमको यही दिखता है वंडर है करके देखते रहो। इसको कौन बोलेगा ये वंडर है करके? All these are not miracles. The real miracles is silence of mind, contentment and equal vision. These are the milestones to reach the goal, that is eternal abode. ये सब होता है सिद्धि। जिसका दुनिया में कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। इससे बढ़ के कोई सिद्धि हो सकता है? सोने के पहाड़ में बैठा है, लात मार दिया उसको, तो इससे बढ़ के क्या सिद्धि हो सकता है? जो दुनिया को लात मार दिया, और क्या कर सकता है वो बड़ा वंडर? One who is kicked off, who has kicked off this world, what more wonder you want to see? These are called real powers. एक कोई नंग धड़ंग वो रास्ता में चलता होगा, करोड़पति का सिर झुक जाता है। क्यों? अरे त्याग को नमस्कार है भाई। And Gita says, Tyagat Santiranantaram. The moment you renounce, you attain the highest peace. These are not only theories. One who experiences it, he understands this is the reality. Reality. There is no pleasure in accumulating objects. There is real pleasure in renouncing it. खाने में जितना आनंद नहीं है, खिलाने में आनंद है। खिलाने वालों को पूछो, है जो बना बना करके खिलाते रहते हैं, अरे उनका आनंद देखते बनता है। वो भूखे प्यासे सो याद नहीं रहता है अपने खाए हैं या नहीं खाए हैं, दूसरों को खिलाते रहते हैं। To feed is real pleasure, not to eat. That one who has understood and experienced, he knows what pleasure he gets out of it. जो नहीं किया उसको क्या बोले, क्या समझाएं? त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग के बराबर कोई चमत्कार नहीं, कोई धन नहीं। तीनों दुनिया का, तीनों भुवन का राज्य तिनका के बराबर है। वो जो जानता है उसको क्या कहें? तो इसी प्रकार भगवान राम को बशीरी जी समझा रहे हैं। ये सब भ्रम में हम बहुत कुछ देख लेते हैं, सब भ्रम का काम है। इट इज द वंडर ऑफ इग्नोरेंस। भ्रम ही इसका कारण है। देखते रहो, जो कुछ देखोगे, देखना चाहोगे,
वो इस दुनिया में दिख जाता है। मायायाम सर्वसंभव, इस समय असंभव भी यह ब्रह्मांड नाश आदि भविष्य में संभव हो जाता है, और इस समय संभव भी सृष्टि रूप स्वप्न विभ्रम प्रलय एवं तत्वबोध में असंभव होता हुआ स्वस्वरूप विश्रांति के लिए समर्थ हो जाता है। फॉर ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग all these world vanishes into two. It takes no time. For the magician, all this magic show has got no meaning. One who understands what is the trick. एवं च ब्रह्म रूप से देखने पर असत्य कुछ भी नहीं है, और जगत रूप से देखने पर तो कुछ भी सत्य नहीं है। यह फलित हुआ। नाउ वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट फ्रॉम द ट्रूथ एंगल ऑफ विजन देयर इज नथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड एज वर्ल्ड, एंड फ्रॉम वर्ल्ड एंगल ऑफ विजन there is nothing called truth. Different angles. When you look at the tail side of the coin, there is no head. When you look at from head side, there is no tail. When you are at daytime, there is no night. When you are at night, there is no day. This is what is told in Gita. Many times we see this. There is no presence in absence. There is no absence in presence. What else you want to understand? हे श्री राम जी, ब्रह्म रूप से देखने पर वैसा कुछ भी नहीं है जो सत्य न हो। If you see from the angle of truth, there is nothing which can be called or seen as untruth. And from untruth angle of vision, there is nothing which is called truth. Everything is magic show. जो सत्य न हो और जगत रूप से देखने पर तो वैसा ही कुछ भी नहीं है। जो असत्य ही न हो, जगत रूप में सब असत्य है, सब परिवर्तनशील है, और परमात्मा की दृष्टि से सब सच है। सृष्टि नामक हिरण्यगर्भ के इस स्वप्न में सर्वत्र सबसे सब कुछ होता ही है। In the dream of that Hiranyagarbha, the womb of the golden womb, where from all these universes are dreamt, so everything is possible. Just as everything is possible in your dream. Whatever you cannot imagine, that also you can see in the dream. जिस प्रकार स्वप्न में निमग्न बुद्धि प्राणी वस्तुओं की स्थिरता ही देखता है, उसी प्रकार सृष्टि रूप स्वप्न में भी निम्नग्न बुद्धि विषयों की स्थिरता देखता ही है। Just as we see in the dream, the flow of downward is seen as if it is flowing upward. In dream everything is possible. So also, by this type of intellect, we see the
एवर चेंजिंग, transitory, not existing objects as reality. We see. So how can you say it is not a dream? संसार में अत्यंत स्थिरता बुद्धि रखने वाला यह जीव एक भ्रम से दूसरे भ्रम में और एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाते हुए मोह को प्राप्त करता है। द ड्रीमर ही goes from one dream to the other dream. He goes on changing the dreams and he is deluded. आखिर में बड़ा मज़ेदार बोल दिए बड़ा मज़ेदार बात बोल दिए। कहते हैं श्री रामचंद्र जी जैसे मुग्ध मृग गड्ढे में गिराने वाले अपने मोह रूप दोष से एक गड्ढे में गिरकर पुनः दूसरे गड्ढे में गिरता है, वैसे ही संसार में गिराने वाले राग द्वेष आदि से मूढ़ यह जीव जिसका गिराना ही एक स्वरूप है, मृग की तरह बीच में से निकल सकना संभव है ही नहीं। ऐसे मोह में यानी देहादि रूप गर्त में प्रवेश भ्रम को प्राप्त होता है। जस्ट एज ए डियर falls into a ditch and somehow gets up and falls in another ditch. Similarly, this man who is deluded by this attachment and delusion of the Maya and all these confusions, he goes from one dream to the other dream. And he enters into one ditch that is called body. He enters into it and he gets out of it after some time and enters into the another ditch. So this is how the world dream goes on eternally. इस प्रकार एक 61वां सर्ग समाप्त हुआ। Somehow अब हम देखेंगे 62वां सर्ग। जीवट आख्यान में विचित्र वासनाओं के कारण भिक्षु के मनोव्यापार से घटित अनेक देहों की प्राप्ति रूप भ्रम का वर्णन। Now we shall enter into a story which gives the logical proof of whatever we have discussed now. हम जो अभी तक चर्चा किए हैं, संसार ऐसे ही है, जो जैसा सोचा उसको ऐसे ही दुनिया दिख जाता है। तो
एक कहानी के जरिए आपको समझाया जाएगा कि जीवट नामक कोई तपस्वी था और वह कैसे कितने ब्रह्मांड कितने जन्म में कितने शरीर में जन्म लिया और समय का भी एक अंदाज लग जाएगा। वो कैसे एक ही समय के अंदर अनेक समय को देखा और कैसे एक शरीर होता हुआ सैकड़ों शरीर धारण कर लिया, सैकड़ों जीवन को वह कितने अल्प समय में अनुभव कर लिया और कैसे ये संसार चक्र में घूमते रहा और ज्ञान होने पर कैसे उसको सारा चीज़ दिख गया। जीवट याद है? जीवट की कहानी। जीवट नाम का some ascetic who did severe penance, and as a result he entered into Nirvikalpa Samadhi and his mind attained the absolute evenness of mind, equilibrium. And because of his previous tendencies, that means sanskaras, he came down from the Nirvikalpa Samadhi and he experienced so many things. We shall go on discussing everything. Beautiful story. It gives you the clarity of all these dreamy worlds. Dreamy worlds. The story of Jivat. Many stories you will go through, and everything ends in only one conclusion. World is not there. We have just assumed it as a reality, and when you contemplate over everything bit by bit, from every angle, analytically, logically, by proofs, by examples, by the sayings of great realized souls, by the words of the scriptures, and by the words of great people, then you can understand this world doesn't exist. Gurudev had one beautiful formula. Even this will pass away. It can solve your most difficult problems. There is a saying, time is the greatest solution. Time solves all the problems. And on this also, there is a Sanskrit saying, O Ram, where is your Ajodhya now? Where are your problems now? Are you worried of your Sita being kidnapped by Ravana? It is gone. Time solves everything. It will pass away. Jad Raghupate Kogat Uttara Kosalam. O Ram, where is your kingdom, Ajodhya, Uttara Kosal? Jadupate, O Krishna, where is your Mathura? Where are your problems? Is there any
Jarasandha will come and fight against you for 17 times. Are you going away, running away from the battlefield because you cannot win him? All these are dreams and everything will pass away. So Gurudev said, beautiful formula. Oh mind, even this will pass away. See, we are severing out of these rainy days in winter, and now we are unable to bear the heat. This is called world. And in summer days we shall shout, oh, it is too hot, it is too hot. In winter we shouted, it is too cold, oh, this unusual atmosphere. Every year people shout like this. It is not of the time or situations, it is because of your mind. You are not prepared to accept the present situations. Always you have the habit to complain. Our Gurudev, Swami Shivanand Maharaj, Swami Chidanand Maharaj also, he used to trace upon non-complaint, no complaint. स्वामी चिदानंद जी एक बार यहाँ आते थे, ये तो उन्हीं का है सब। नॉन कंप्लेनिंग एटीट्यूड कैसा होता है? हाउ द पर्सन हैज द हैबिट ऑफ नॉन कंप्लेनिंग to adjust. Gurudev used to say, adjust and accommodate. This is called highest sadhana. You may close your eyes and sit for days, but you cannot adjust with the situations when you open your eyes. What benefit you gained? Adjust and accommodate, this is called highest sadhana. That also means live in present, reject nothing, and welcome nothing. That is the real life at present. That is what we discuss many a time in this Yoga Vasishtha. One should live at present. So one who lives at present, he never complains, he cannot complain. Complaining is a very, very wretched, very low quality. Complaining everyone, against everyone, that means you are so unadjustable. A man who can adjust with the present situations, the whole world is ready to welcome him. But one who cannot adjust, wherever he goes, he is in trouble. He is always in trouble. Adjust and accommodate and bear insult and injury. All these are formulas of Gurudev Swami Shivanand. Even this will pass away. All these formulas, they help you a lot to keep a balance of mind and to be happy. चलो अब 62वां सर्ग में हम देखते हैं ये जीवट बेचारा क्या किया।
The name gibbet itself shows a particular small being. gibbet. अरे अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच इधर कहाँ से ला दिए? चुनाव है स्वामी जी, नया कैंडिडेट आ गया है। हाँ, ये वशिष्ठ उवाच के साथ जगह पर अर्जुन उवाच। अर्जुन का गीता तो समाप्त हो चुका है। नहीं, 62तम सर्ग और जीवट उपाख्यान अर्जुन उवाच। राम जी को वशिष्ठ जी कहते हैं और अर्जुन उवाच आ गया। ऊपर लिखा अर्जुन उवाच और नीचे लिखा वशिष्ठ जी कह रहे हैं। समाओ। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है राघव, एक भ्रम से दूसरे भ्रम में जा रहे, इसे कहे गए अर्थ में दृष्टांत भूत यह एक ऐसा इतिहास जो किसी एक साधारण मननशील भिक्षु का वृत्तांत है, कहता हूँ आप उसे सुनिए। एक कहानी में बोलता हूँ, एक भ्रम से दूसरे भ्रम में जाना, एक खड्डे से दूसरे खड्डे में जाना, इसके ऊपर मैं एक कहानी बोलता हूँ, सुनो। इसमें एक पॉइंट याद आ गया। ये जो एक खड्डे से दूसरे खड्डे में जाना, एक खास करके हिरण के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन हाथियों को पकड़ने के लिए ऐसा भ्रम पैदा करते हैं राजा लोग। जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जंगल में जहाँ बहुत सारे हाथी रहते हैं, झुंड में रहते हैं हाथी, उसमें जा करके बड़े बड़े खड्डे खोदते हैं राजा लोग, जंगली हाथियों को पकड़ के ट्रेनिंग देने के लिए, पालतू बनाने के लिए। यही तरीका था पहले। तो बड़े इतने बड़े बड़े खड्डे खोदेंगे जिससे हाथी उठ नहीं पाएगा। हाथी का भारी शरीर होता है, इसलिए वो खड्डे से उठ नहीं सकता है। एक बार गिर गए तो गिर गए, पर गिरना कठिन होता है, पर गिर गए तो गिर गए। तो क्या करते हैं वो, बड़े बड़े खड्डे खोद करके उसमें हम जैसे मकान के आजकल सीमेंटेड मकान बनाने के लिए छत बनाते हैं, छत के नीचे सेटरिंग करते हैं। सेटरिंग करने में क्या करते हैं, सब खंबा खड़ा करके उसमें फॉल्स सीलिंग बनाते हैं। उसके ऊपर फिर वो सरिया का जाल बिछा करके उसमें फिर सीमेंट वगैरह डाल करके फिर 20-21 दिन तक रखते हैं ताकि सीमेंट सेट हो जाए, और उसका क्यूरिंग वगैरह करते रहते हैं। तो फिर छत जब मजबूत हो जाता है तो ये जो फॉल्स सीलिंग उसके नीचे बना हुआ था पहले, उसको निकाल दो, छत ऐसे ही रहेगा। ये तरीका है आजकल। तो ऐसे ही राजा लोग खड्डा खोद करके, बहुत बड़े बड़े खड्डे खोद करके उसमें सब ऐसे ही फॉल्स सीलिंग बना देते हैं। फॉल्स सीलिंग बना करके उसके ऊपर झाड़ी झूड़ी डाल करके ऐसा बना देते हैं, मिट्टी वाटी डाल करके उसको ऐसा बना देते हैं कि पता चलेगा नहीं कि यहाँ खड्डा है। और ऊपर जैसे हाथियों का खाने पीने का, जैसे बहुत सारे
डालियाँ पत्ते होते हैं ये सब रख देते हैं। हाथी जंगल में घूमते घूमते और जहाँ हाथी के झुंड होगा उनको घेर करके ड्रम वगैरह और कुछ आवाज़ वगैरह लगा करके उन हाथियों को भगाते हैं। भगाने से वो हाथी फिर इसी दिशा में आएंगे। आते आते जो बड़ा हाथी होगा वो गिर जाता है और उठ नहीं पाता है, उससे वो खड्डे में गिर जाता है। वो फॉल्स सीलिंग सब टूट फूट जाता है। और वो एक बार गिरा तो उसको दूसरे पालतू हाथी बड़े बड़े बलवान हाथियों को ले करके उस जो जंगली हाथी का पैर को बंधवाते हैं और उसको दूसरे पालतू हाथियों से पकड़ के ले आते हैं। उसको पहले भूखा रख करके बहुत दिन तक, जब वो बहुत कमज़ोर हो जाता है तब उसको जो ट्रेनर होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर भोजन पानी दे करके उसको पालतू बना देते हैं। वो फिर मान जाता है बात सब। तो इसी प्रकार हाथी को खड्डे में डालते हैं, एक खड्डा में डाल करके दूसरे खड्डे में ले जाते हैं। भाग नहीं सकता वो। ऐसे ही हम लोग पड़े हैं खड्डे में, निकल नहीं पाते हैं। How do they capture wild elephants? They make big ditches and they make some false ceiling over that and make it natural ground. Nobody can, no animals can have suspicion. And they drive from other directions the elephants, and they will come this side. This side will be silent and no disturbance. So when the elephants come this side, some of the elephant groups, someone will fall in the ditch, and it will be so big ditch the elephant cannot get up. And by the pet elephants, the kings arrange to tie it up and bring, and the trainers train them. First of all, keep hungry for many days. Then only they will come under control. महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, एक मननशील भिक्षु का वृत्तांत मैं कहता हूँ, आप उसे सुनिए। कैसे एक भ्रम से दूसरे भ्रम में वो भटकता रहा। मननशील है, ए मैन ऑफ कंटेम्पलेशन, thoughtful person, ascetic, and a bhikshu. Generally bhikshus are said, the word bhikshu is used in Buddhic
parampara. So bhikshu means same ascetic. भद्र समाधि के अभ्यास में निरत और सम दम वैराग्य आदि से संपन्न कोई एक परिव्राजक था. There was a wanderer monk, wandering monk. Monks used to wander from place to place. Why? Because if you stick to one place, you may develop some type of attachment for the place, for the people around you. So there is a tradition. The monks used to go on traveling, not stick to one place. Hardly it is allowed. There are some rules and regulations. You should stick to one place only one night, and if it is a big city or a place of pilgrimage, you can stay on for 3 nights. That's all. Not more than that. Or else you may have attachment for the place and the surroundings. On this also there is a saying, बहता पानी चलता जोगी कभी न धरे मैल. The flowing water and wandering monk never accumulate garbage. They are ever pure, ever pure. वो परिव्राजक था, वो निरंतर अपने आश्रमोचित श्रवण मनन आदि व्यवहारों से पूरा दिन बिताता था. Whole day, you will be contemplating over the injunctions of the scriptures or the words of great wise people, whatever he hears, whatever he has heard before. He goes on contemplating over this, and it becomes very easy because there is no problem for him if he can adjust, or else every moment there will be problem. If you can adjust, there is no problem at all. You need not worry for your food, your shelter. I used to wander for some time and I have experience. If you really depend upon God, that you can experience how God arranges, the nature arranges everything for you. You are dependent on Him. The nature arranges everything for you. You need not worry for any of your needs. But you have to adjust. You have to adjust with the circumstances. I used to sleep wherever it is evening. I am tired, working the whole day. I used to sleep at the roadside. The sky is the roof. I used to enjoy also that beautiful Dunlop bed I arrange. I used to collect some leaves from the jungle, from the roadside trees, and make a beautiful soft bed and pillow also and everything. I enjoy it. Wherever little support for water or something, I used to sleep at the roadside. In jungles, if some
stones, half cave like. If I get, I make a cave out of that and protect it by these leaves and branches and enjoy the night there. Morning, get up and go your way. Not to worry about cleaning it and protecting it from sun or rains. No worries. And whenever I was feeling very hungry, I used to go for alms, or else for many times I have enjoyed fasting 2 days, 3 days, not caring for collecting alms. Anything I get, by the way I eat it. Once I remember in Gujarat, it was some season when they harvest peanuts. Truckloads of peanuts they were carrying peanuts, and in the road somewhere some falls down, and I was hungry. I was not having food for 3-4 days. I was very tired. What to do? So I collected all those peanuts from the roadside and washed it and ate. It was my food for many days. I enjoyed it. No need of frying it or doing something. Raw itself. Sometimes some wild fruits, something, or leaves, whatever. When there is hunger, whatever you get, you enjoy it. In this way, the wandering monks, they enjoy their life. And all the time, you depend upon God and the nature, and you realize how the nature helps you. So this monk was a wandering monk, and he was always, yes, but the whole day there is no work, only walking. So the mind will be always in your continuous japa or contemplation, because you know nobody there. You cannot gossip with someone because you are a stranger everywhere, and you have nothing to do. So whatever you give to the mind, poor mind obeys it and it goes on with it. एक चीज कुछ दिमाग में अगर घुस गया तो वो कितने दिनों तक वो मन से निकलता नहीं। और तो इस हालत में ये जो परिव्राजक सब तपस्वी लोग होते हैं, उनका मन हमेशा दूसरी दुनिया में रहता है, भगवान के ऊपर रहता है, प्रकृति के नियम के ऊपर दिखता है, बहुत चीज़ समझ में आता है। तो ऐसे ही वह जीवट नाम का बड़ा भारी परिव्राजक था, हमेशा घूमते रहता था और श्रवण मनन आदि व्यवहारों से पूरा दिन बिताता था। होल डे यू टू contemplate and go on walking, no other work. There is nobody to gossip with, chit chat, nothing. So mind obeys your command. समाधि के
ध्येयाकार की दृढ़ता से चित्त को पूर्व रूप की शून्यता में परिणत कर देना स्वरूप समाधि के अभ्यास से पहले की वासनाओं का त्याग कर देने में समर्थ हुए। उस परिव्राजक का वह चित्त क्षण में जिसका चिंतन करता था, शीघ्र ही वह उस भाव को वैसा प्राप्त हो जाता था जैसे जल तरंग भाव को प्राप्त होता है। He was well established on the mind's concentration because the situation makes you so. And whatever he used to think of, he was getting it without any effort, because mind is one-pointed. So whatever you think, it comes to you. That is a power that is called a type of siddhi because of one-pointed mind. Whatever you think. That is what in Gita also Lord Krishna has explained to us. Ananya chintayantam am yojanaha paripasate tesam nityam yuktanam yoga kshemam vahamyaham. One who thinks of me alone, that means one-pointed mind, nothing else. One who thinks of me alone, nothing else, I take the contract of looking after his needs and providing him his needs and protecting whatever he has with him. That becomes my duty, because he thinks of me, so I think of him. Ye yathamam prapadyante tam tatheva bhajamyaham. One who thinks me in a particular way, in the same way I think of him. So, when you think of the object or subject or the truth or whatever, that becomes available with you. When God is thinking of you, the all-controller, what do you lack? When the director of the supermarket is working with you, what do you need more? So God assures it. It is, really speaking, of course, for a man of devotion and faith and feelings, it is said in this way. But for an analytical man, it is to be understood as whatever the mind thinks, that it takes that form. This is the real process. Your mind becomes God, and your mind becomes the form of your need object. So it avails you. In this way, that is the natural process. Not only Lord Krishna, anything you think, if it is with one-pointed mind, it is before you. And that is how these yogis, they show these occult powers. That is the trick. When they attain that
one-pointedness of the mind. Whatever they think, that occurs, that has to manifest. This is the real siddhi, one-pointed mind, and need one who needs nothing, then only you can have one-pointed mind. If your needs are many, then your mind will be traveling on those needs. That is, one who is slave to his desires, he is slave to the whole world. So how much restless you be? Because you have to serve everyone to fulfill your desire. If some person gets one job, how much he has to devote to the owner of or the boss? And if you have so many jobs, what will it become your situation, how complicated it becomes? You cannot think. So one-pointed mind means everything in your clutches. Whatever you think, it has to manifest. That is called Satya Sankalpa. So this person, Jivat, was always wandering monk, always contemplating over the words of the scriptures and the great people, and his mind was very one-pointed and silent, and because he was a wanderer, so he had no attachment to anyone and nothing belongs to him. So naturally, mind becomes calm and quiet. And whatever he wanted, he got it. समाधि के ध्येयाकार की दृढ़ता से. Samadhi, when one is established in samadhi, means one-pointed thought for long time. तो क्या होता है, पूर्व रूप की शून्यता में परिणत कर देना स्वरूप समाधि के अभ्यास से पहले की वासनाओं का त्याग कर देने में समर्थ हुए. Because your mind is always at present, so naturally it becomes easy to forget the past. And this is how also one can remember the past clearly. Because mind is one-pointed. So one-pointed gaze, that vision, can see everything at a time, here and now. So this is how the great yogis, they see the past, everything at a time, here and now, at present. So it is easy for them to forget the past also. And he is capable to forget the past, and so there is no question of desires, because we desire on the base of the past, and we need something because everything is dependent on the past. Present is the outcome of past for an ordinary person. For a yogi, present is not dependent on the past. And future also is not dependent on present or past for a yogi. But for ordinary person, your past is a base for the present and future. Accordingly, you plan for the future,
you have desires for the future, they are based upon the past. So, we discuss very often, one has to, a yogi has to live at present, not depending upon the past nor planning for the future. Present is the real life. This is how a yogi forgets the past and never plans for the future, because for an wandering monk, there is no future. Everything is present. Everything, every moment changes. So there is no expectation of anything. How can you expect something when it is unknown? You are every moment, in every situation, you are a stranger. तो हुआ क्या, समाधि का ये चलता फिरता समाधि, बैठ जाना समाधि कोई खास नहीं होता है। सहज समाधि इसी को कहते हैं, सहज समाधि, the common samadhi, easy samadhi. And there is also easy kumbhak, sahaj kumbhak. Kaise? When your mind is absent, that means you are not aware of your breathing system and body and your all these affairs and your needs, then mind is absent. That means in some other level. And at that time, if your body is steady, that means you are in a particular steady posture. It is not for the wandering monks. If you are sitting without thinking of anything, naturally the breath stops. That is called Sahaj Kumbhak. Automatic. It becomes automatic. When you enter to meditative mood without any trial, without depending upon pranayam, then mind has to stop by itself. When you do continuous japa for a long time, you forget all other things, and your mind is merged in the japa system, chanting, then after a while your breath has to slow down and it has to stop by itself. That is called Sahaj Kumbhak, automatic stoppage of the breath. It stops by itself. You need not practice it. You see, there is a triangular force, always I talk upon it. Triangular force means the mind, prana, and the body with senses. That may be taken as ego or whatever you name it. So triangular force. Out of this, if one is stopped, the other two has to stop. If your wheels are put brake, your body of the car cannot move. If one part of the engine stops working, the whole car stops. A car body, a moving body, is nothing but a cooperative work system. If one thing stops, the others has to stop. In this way, body also works. So if you stop the mind somehow or other, then prana has to stop. If you stop your body somehow or other, no movement of the body,
then prana has to stop. And of course, when you stop your prana working, then mind and body have to stop. This is the formula, practical. It is not a theory. You can experience it. And this is how, this is called Sahaj Samadhi. Sahaj Samadhi, while walking, while talking, while doing everything, if you are not concerned with all these affairs, then naturally mind gets steadied on your chosen point, whatever you have chosen. Let it be God or name of any God or any form or anything, any aspect of God. Mind stops there, clings to it. And when mind is absent, naturally that is called samadhi. And while working everything, walking or talking or doing something, even then your mind is resting in the particular point. That is called Sahaj Samadhi. That is how the wise people behave in this world, relative world, having no concern, no attachment, no involvement, nothing, and without any expectation. Just as a machine, it will go on. For example, if your car was moving in a great speed and all of a sudden you off the engine, it will go on moving for some time. That momentum will move it. In that way, by the force of that momentum, pre-momentum, the body starts working because it was working before. So it will go on working without any concern. This is how the wise people deal in, they do everything in a relative world, having no concern. So this is what he is explaining. वासना का त्याग कर देने में समर्थ होते हैं और उस परिव्राजक का वह चित्त क्षण में जिसका चिंतन करता था, शीघ्र ही वह उस भाव को ऐसे प्राप्त हो जाता था जैसे जल तरंग भाव को प्राप्त होता है। कितना देर लगता है पानी को लहर बनने में, तरंग बनने में? How long it takes for the water to become a wave? Similarly, a constant mind, steadfast mind, one-pointed mind, whatever it thinks, it has to manifest then and there. It becomes it. Mind becomes it. Mind takes that form without giving up its real existence. Just as the water takes the form of wave without giving up its properties, similarly, mind becomes it without giving up its previous properties or the previous type of its existence or form or properties. Even then it becomes something else. That is called Satya Sankalp, or whatever you need, you get it by your willpower.
Satya Sankalp. It appears before you. Anybody can experience it. It is nothing, something most wonderful, unachievable. No. Just to think of one thing. But for the worldly people, it is the difficult most job, because their mind is so restless. तो उसका वो स्थिति बन गया था. But he heard that state of his being. किसी एक समय में समाधि से विरत होकर वो उठा और एकाग्रचित्त होकर अपने ही आसन पर बैठा. इन दिस स्टेट क्या होता है? ऐसा हालत में कहीं बैठ गया तो बैठ गया, कहीं सो गया तो सो गया, कहीं चल रहा तो चल रहा है. यही तो विदम तो ऐसे ही होता है. इन दिस स्टेट ऑफ माइंड they will not have any concern with their movements or their activities, body, physical activities. So whatever they do, it goes on continuously. कैसे? जैसे भांग खा करके लोग करते हैं काम. Drugs. Just as the people with the drugs, they go on doing same thing continuously without having any awareness of it. हंस रहे हैं तो हंसे चले जा रहे हैं. हाँ, अरे खाना खा रहे हैं तो खाते चले जाएंगे, इतना खाएंगे. कोई तो खाने के पहले थोड़ा भांग की गोला ले लेते हैं और बढ़िया मजा लेंगे करके. वैसे ही उन लोगों का हालत होता है, ज्ञानियों का हालत ऐसे ही होता है. कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, भूल गए सब. Whatever is going on, it is going on. They forget all other things. Because mind is steady, so it never fritters. तो हुआ क्या? कभी वो बैठ गए समाधि में तो समाधि में बैठ गए, बहुत दिन तक बैठ गए, कोई होश नहीं. He sat in samadhi, sat. Now wandering has no meaning. He sat, then he went on sitting for days, nobody knows, because he has no acquaintance with any persons, no friends, no enemies. So if he is sitting somewhere in the jungle, he is sitting. Who cares for him? In that way, these people, they enjoy a different life. Most wonderful life. Carefree. इसी को कहते हैं मस्तराम. मस्तराम, मस्ती. मन मस्त हुआ तो क्या सोचे, मस्त हुआ तो क्या बोले. मन मस्त हुआ तो क्या बोले. अरे हंसिया को मिला मान सरोवर, फिर ताल तलैया क्यों डोले. मन मस्त हुआ तो क्या बोले. हीरा मोती माल खजाना गांठ बंधा तो क्यों खोले.
जब गांठ बांध करके सारे धन संपत्ति अपने जेब में रख दिया तो बार बार खोल करके क्यों देखे? सारे धन का मालिक तुम हो। मन मस्त हुआ तो क्या बोले। ऐसे ही मस्ती वो लोग लेते हैं। If you once taste it, अरे उसका मौज और किसी में नहीं है। किसी चीज को कोई परवाह नहीं, किसी चीज की कोई चिंता नहीं, किसी चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं, तो फिर क्या है जिंदगी में? क्या हुआ? चिंता मिटी, चाह मिटी, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। कोई परवाह नहीं किसी के लिए। वो एक बड़ा विचित्र जिंदगी होता है भाई। तो वह जीवट जो समाधि में एक बार कहीं बैठ गया था, उस समाधि में से उठ गया और उठा और एकाग्र चित्त होकर अपने ही आसन पर बैठा रहा थोड़ा देर के लिए। देखते हैं तो फिर जो जिसको दुनिया में कोई काम नहीं और तुम ही बोल दिया कि अतीत को वो भूल चुका है और भविष्य का कोई प्लान नहीं है, ऐसा जीव वो समाधि से उठेगा क्यों? क्यों उठेगा? ये बहुत बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, ये साधारण क्वेश्चन नहीं। समाधि से वापस आते हैं क्यों? और इसी के साथ साथ दूसरा भी सवाल है, ये दीर्घजीवी लोग इतने बड़े ज्ञानी और सब कुछ होते हुए भी उस शरीर के साथ मोह क्यों है उनका? शरीर चला जाता तो चली जाता, शरीर तो नाशवान है, ये शरीर को क्यों बांध रखे हैं अपने साथ? ये तो एक बोझा है, इसको क्यों ले लेकर के फिरते हैं? ये दोनों सवाल बड़ा विचित्र सवाल है भाई। तो ये ऐसा हुआ, इसको विचार करेंगे हम। उस पर स्थित होकर वह किसी एक क्रियाक्रम का विचार करने लगा। मन तो है उसका, मन एकाग्र है अलग बात है, मन का तो नाश तो नहीं हुआ ना। मनोनाश होता क्या, ये भी एक पॉइंट है। समाधि में जब गया हुआ और समाधि से फिर वापस क्यों आया, और मन फिर किसी कार्यक्रम का चिंतन क्यों किया, कैसे करेगा? मनोनाश हुआ या नहीं, ये सारे चीज ये योग का टेक्निक के ऊपर ये सारा स्थित है। इसीलिए इसको एक एक एनालिटिकली इसको समझना पड़ेगा। समाधि से, ध्यान से मन नीचे क्यों आता है और आने के बाद क्या स्थिति होता है उसका, और फिर जब समाधि में गया था दुनियादारी को भूल करके, अतीत को भूल गया है, भविष्य का चिंता नहीं, तो फिर वो वर्तमान के स्थिति को बदला क्यों? कैसे बदलेगा ये सारे चीज विचार करेंगे हम टेक्निकली। और फिर वो क्रिया, किसी क्रियाकर्म का क्यों शुरू करेगा? और ये जीवट जैसे परिव्राजक भिक्षु हैं, तो इसका क्या क्रियाकर्म होगा, क्या कार्यक्रम होगा, क्या कार्य करेगा ये देखते हैं।
इसको मेरे ख्याल में कल देखते, नहीं तो इसे हम फंस जाएंगे तो ये आधा घंटा पौने घंटा से निकलना मुश्किल हो जाएगा है। टुमारो वी शैल सी all these questions, very important questions. Once one enters into samadhi, why and how he comes down from that state of samadhi? Why? And when there is no past, no future, then how can he come down? And after coming back or coming down from the samadhi level of mind, what he can do? Because his mind becomes useless for the worldly transactions. What can he do? Once a piece of wood burnt away and it has become ashes. Will it become a rafter, a beam for something? Will it support something? Can you make some chairs or tables from it? It has become useless. Similarly, when the mind enters into the samadhi state, what happens to the mind? This is to be seen very minutely. What happens to the mind? And we shall see tomorrow. And how can he plan for some actions or do some actions, and if at all he does some actions, then how it will be. Tomorrow we shall see. Beautiful story. Many scientific and yogic points will be clear by this story. Hari Om Purnamadaha Purnamidam Purnada Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevamasisyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai, Satchidananda Bhagavan ki jai, Sabda Brahma ki jai, Saraswati Maharani ki jai, Yogavasirji Bhagavan ki jai. Hari Om.